APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एक प्रोटोकॉल विद सम सेट ऑफ रूल्स है जो दो या फिर दो से ज़्यादा एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्शन करता है। तुम एवरीडे लाइफ में जो भी काम करते हो इंटरनेट यूज करके, उसमें ज़्यादातर हिस्से में APIs ही होते हैं। ATM से लेके VPN तक सब में APIs है। इट्स लाइक अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट, जो किचन विच रेफर्स एज बैकएंड एप्लीकेशन और डाइनिंग स्पेस विच रेफर्स एज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के बीच में ऑर्डर्स रेफर्स एज डेटा को प्रोवाइड करता है। तुम इसको ऐसे समझो, जब क्लाइंट साइड से कुछ रिक्वेस्ट भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक API endpoint ट्रिगर होता है एंड दैट API हिट्स द सर्वर व्हिच प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद सर्वर सेंड्स बैक द रिस्पॉन्स विद द रिक्वेस्टेड डेटा टू द क्लाइंट। जैसे हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वेटर ऑर्डर आइटम एंड टेबल नंबर लेके किचन को प्रोवाइड करता है। किचन चेक्स द ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फूड अकॉर्डिंगली, देन वेटर उसी रिक्वेस्टेड फूड को टेबल नंबर वाइज सर्व करता है एंड वी कंज्यूम दोस फूड। सिमिलरली क्लाइंट साइड भी वैसे ही डेटा को कंज्यूम करता है एंड प्रोसेस करता है अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से। सो लेट्स क्रिएट सम API। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर एप्लीकेशन बनाया था, तो अगर वो वाला मिस हो गया है तो आई बटन देख लो। नाउ लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो IDE फर्स्ट एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। स्क्रॉल बिलो एंड ASP.NET कोर वेब APIs पे क्लिक करो। हमने पहले ही APIs के लिए एक फाइल लोकेशन क्रिएट किया हुआ था एंगुलर के टाइम, उसको कॉपी करो या फिर एक नया लोकेशन बना लो एंड पेस्ट द पाथ हियर। नाउ अपडेट द प्रोजेक्ट नेम एज एम्प्लॉय ऐप API। हिट नेक्स्ट। फ्रेमवर्क में हम .NET 7 यूज करेंगे और बाकी सारे बॉक्सेस को चेक कर देंगे except the enable docker. Now hit create. Project ready है। So we have a program.cs file, controllers and appsetting.json, जिसके अंदर हम सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉन्फ़िगर करेंगे। एक फोल्डर बनाते हैं, नाम देते हैं डेटा, और एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम देंगे मॉडल। Inside model we need to create one CS file named employee। ये बेसिकली एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा जैसे हमने एंगुलर के टाइम बनाया था। तो लेट्स ऐड दो सेम प्रॉपर्टीज इन द C# मैनर नोड। अब क्योंकि हम इसी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे डेटाबेस टेबल्स एंड कॉलम्स डिजाइन करेंगे, सो हमें .NET को बताना पड़ेगा what will be the primary key for the table and other details like which columns will store not null values in the table and so on। So उसके लिए in properties we have to add data annotations like key for the primary key, required for not null columns, etc. जैसे ID will be the primary key for our case, so I have to add key there to denote it and also import the required library. As I need other properties as not null in the database, so हम required add करेंगे in every section. Next हम data folder पे एक class बनाएंगे which will be the dbcontext file for the application. Let's name it as employee dbcontext and inherit the dbcontext class to it. ये error throw करेगा until we import the desired package for that. So right click and go to the quick action refactor and try to see what IntelliSense is suggesting. Now click on the tools and go to NuGet package manager and click manage NuGet package for solution। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 3 पैकेज इंस्टॉल्ड है बट वी नीड मोर। डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें कुछ और पैकेजेस की जरूरत है। सो लेट्स इंस्टॉल दोज वन बाय वन। हम .NET 7 के रिलेवेंट पैकेजेस वर्जन इंस्टॉल करेंगे। One eternity later. ओके, सो ऑल डन। चलो अब DB कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करते हैं। फर्स्ट लेट्स क्रिएट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। जस्ट टाइप C dot and hit tab. Add DB context options parameter and append base to it. अब एक एम्प्लॉय नाम का प्रॉपर्टी बनाते हैं। टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी dbset and dbset is of employee type. Import model.employee for this and we are done. इस नाम से क्या क्रिएट होगा वो तो हमने कर दिया, बट क्रिएट होगा कहाँ पे? फॉर दैट appsetting.json ओपन करेंगे एंड ऐड वन की वैल्यू पेयर इनसाइड द कनेक्शन स्ट्रिंग। नेम इट एज constr एंड वैल्यू की जगह पे कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, बट वी डोंट हैव एनी कनेक्शन स्ट्रिंग्स एज ऑफ नाउ। कनेक्शन स्ट्रिंग तो छोटा डेटाबेस ही नहीं है।
So let's open SQL Server Management Studio. In the local server, expand the database and click on the new database to create one. नाम देते हैं employee app DB and hit OK. Let's come back to the Visual Studio again and create a connection string for the employee app DB. For this पहले server equal server name देंगे. तुम database के properties से server name check कर सकते हो. Then database equal to database name enter करेंगे. सेमीकोलन के बाद trusted underscore connections equal true करेंगे and that's it for the string. अब किसी भी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट program.cs फाइल होता है as per the new update. पहले startup.cs होता था. So whatever dependency are there, we have to inject those inside the program.cs file. In this context, हम dbcontext फाइल को इंजेक्ट करेंगे. Type builder.service.add dbcontext employee app dbcontext, then options.user.sql-server. Inside that, builder.dbcontext, builder.configurations.getConnectionStrings, and then the name of the connection string, then semicolon. Now, Package Manager console open करेंगे. Click on the tools and go to NuGet Package Manager and click Package Manager console. Type add migration, then type any name and hit enter. अब entity framework given data के साथ interact करके एक migration file create करेगा, which eventually is the instruction and the information to create a table accordingly in the database. ये देखो, migration file with details written inside it open हो गया है. Now type update-database and the file name. Hit enter and that will create you the tables. Let's see those in the SSMS. Check it. जैसे हमने properties define किया था, वैसे ही ID made as primary key and other columns as not null. Close this. Now हमारा application database के साथ successfully connected है. So technically अब हम APIs लिख सकते हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Click on controllers and add one of the controller which is of API type and name it as employee controller. Note, don't forget to add suffix controller in the name. तुम देख सकते हो, it's an inherited class of controller base. It's an API controller type जिसका route API/controller name है. For our case, it would be API/employee. पहले dbcontext class को initiate करते हैं with underscore context. Create a constructor and pass the employee dbcontext as parameter. Map the underscore context to context and done. चलो, so let's start the CRUD operation. Create के लिए HTTP post protocol, that is new data add करने के लिए हम post protocol use करते हैं. Then read operations के लिए get call. We have two read operations, like एक list of employee fetch करने के लिए and दूसरा particular employee के details को fetch करने के लिए. Update के लिए put to update already created data. Lastly, delete for deleting any data from the database. Let's start with creating an endpoint named as add employee. So my method will be public or type होगा iActionResult. Then method name is add employees. Route attribute में हम method name को pass करेंगे. Let's make this method asynchronous using async keyword. Change the type to task. Note, एम्प्लॉयज ऐड करने के लिए हमें सारे प्रॉपर्टीज एंड पॉइंट को देने पड़ेंगे एक्सेप्ट आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, बिकॉज आईडी हम बैकएंड कोड में क्रिएट करेंगे. एम्प्लॉय मॉडल नाम का एक प्रॉपर्टी क्लास बनाते हैं जिसमें एम्प्लॉय के सारे प्रॉपर्टीज होंगे एक्सेप्ट आईडी. नाउ add employee के parameter section में EMP model pass करेंगे. So now inside, let's check if employee table already has same email ID or not. For that, एक variable create करेंगे check EMP and उसमें underscore context dot employee dot where e dot email equals emp dot email dot first or default async pass करेंगे with await keyword. This link call will add the data to the check employee variable if it's find any such email. Now if check EMP is not null, then method will return 200 OK response with the message as employee is already there in the DB. Else,
First, create a new object of the employee and add GUID.newID to the ID of the object. Remaining will be mapped accordingly with the incoming EMP parameter. Next, type await underscore context.employee.add async and pass the employee to it, which will add the employee eventually in the database. Now, database में जब हम कुछ भी change करते हैं, we have to save change this. So we will add await underscore context.save change async and return 200 OK response with the employee. Next endpoint is get all employees. Before that, let's add one attribute to the add employee parameter named onboarding. Okay. तो get employees भी asynchronous method है जिसके अंदर result variable में हम full list of employees को query करेंगे with underscore context.employee.toList async and return 200 OK response with the result variable. Second get call will be for fetching the single employee detail. तो उसके लिए सेम स्ट्रक्चर एंड एक ID पैरामीटर पास करेंगे फॉर्म राउट के साथ टू फिल्टर आउट द एम्प्लॉय लिस्ट टू गेट पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिटेल्स. पहले एम्प्लॉय वेरिएबल में अंडरस्कोर context.employee.find async ID पास करेंगे टू फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स विद ID. If employee is not null, then return 200 OK response with the employee. Else, return not found. Route attribute add करो with the same name. Second last API is update employee 1. तो हम ID को छोड़कर सारे प्रॉपर्टीज को अपडेट करके देखेंगे. पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उसके पैरामीटर में फ्रॉम राउट एट्रीब्यूट देन ID एंड एम्प्लॉय मॉडल ऐड करेंगे. किस एम्प्लॉय को अपडेट करना है उसके लिए ID और क्या अपडेट करना है उसके लिए एम्प्लॉय मॉडल यूज करेंगे. नाउ एक एम्प्लॉय वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसमें अंडरस्कोर context.employee.find async ID सिमिलर लाइक अपडेट 1 पास किया. सो अगर एम्प्लॉय वेरिएबल इज नॉट नल तो हम एम्प्लॉय के डिटेल्स को इनकमिंग एम्प्लॉय मॉडल के डिटेल के साथ मैप करेंगे एंड अपडेट मेथड यूज करके डेटाबेस में अपडेट कर देंगे. नाउ पहले ही बोला था अगर डेटाबेस में कुछ भी अपडेट हुआ तो सेव चेंज मेथड को इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है. On that note, write underscore context.savechange async and return OK with employee detail. In else condition, return not found response. Finally, to delete any employee, create the structure first and add from route attribute with ID in the parameter. क्योंकि जिसको डिनोट करना है उसके लिए हमें ID का जरूरत पड़ेगा. Now, अपडेट की तरह ही find async मेथड से एम्प्लॉय को ढूंढेंगे. Then if EMP variable is null, then return not found. Else underscore context.employee remove ID. Then save change async to save and return the response as OK with a message as employee data removed successfully. So we are done with all the APIs. Build the code with Ctrl plus B and run it. In Swagger UI, you can see 5 endpoints. So if I execute get all employees, I'll find nothing. अभी तो कुछ data added ही नहीं. So let's add one employee. In the request body, you can find a JSON string. Update it with your details. Then execute. You can see all the given details with an ID is generated. Now let's execute the get all employees again. This time we will find the data inside the list.
एक और डमी डेटा को ऐड करते हैं। See the list now. Okay. Next, copy the ID from the employee and paste it inside here. Execute. तुम employee के सारे details को देख सकते हो. If I put a wrong ID, you can see the response as not found. Now ABC employee की ID update API में paste करते हैं. And let's update some data. Execute. You can see data of ABC is modified as directed. Run the get all employees to cross check it. Lastly, let's copy the ID of ABC for delete operation. Let's paste it inside the ID section and execute. तुम clear message देख सकते हो that employee is removed successfully. To cross check, let's run the update API again. This time it is throwing 404 not found for the same ID. So we are done with all the implementation and execution. To integrate it with Angular, we need this URLs. First part will be our base URL and this will be the constant part of the API. बाकी तो हम method बनाने के time define करते हैं. So our server side and client side both are done. Now इसको connect करते हैं. उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो. मिलता हूँ तुमसे वहीं पे.